So now, students, what are the uses of the binary number system? It is a 3 marks question. Basically, it is an exam style question which is frequently asked in question related the number system. So the question is that what are the uses of binary number system? So the first one is that to process the data in logic gates and transistors. You know that computer only understand the binary number system. So the instruction we just fed into the computer, we just put into the computer, it just get converted into zeros and ones, and then it is processed in logic gates to store the data in register. Means the instructions which we just input into the computer, or the data we just input into our computer, it's just stored in the registers in the form of zeros and ones. And to process the data on computer, and it only understands 0 and 1. The the point which I am talking about is that basically computer only understands, the processor only understands zeros and ones. So the any type of data we are just inputting, whether it is an image or it is an audio, it is a picture, it has to be converted into zeros and ones at the back end, and that zeros and ones are processed by the processor, as computers only understand zeros and one, which is also called machine code. So now we have a general idea regarding those number systems, the denary, binary, and hexadecimal. So this is a table. Basically, it is a quick revision. Denary is a base 10, binary is a base 2, hexadecimal is a base 16 number system. The denary used in our daily life counting, binary used to store data in registers, logic gates, and for the processing. Hexadecimal basically are used in MAC addresses, IP addresses, HTML color codes, or error codes. Basically, they use the digits from 0 to 9, they use the digits 0 and 1, and they use 0 till 9, and then afterwards till 15 we use A to F. Has fewer digits for the same value, has more digits, has fewer digits. Like for example, what that point means, I want to write 66. Okay, for writing 66, what I have to do, I have to write like this. Okay, so I have to write more digits. And for writing 66, what I have to do, I have to just write down 4, sorry, yes, 4 and 2, like this. Base 16, base 2, and base 10 number system. Now, another important question, which is basically where hexadecimal system is used. Basically, it is base 16 number system used in HTML color codes, MAC addresses, IP addresses, error codes, and why they are used. The question is that this is the question for 3 or 4 marks, and again this is a question for 3 and 4 marks. The first question is that where they are used, and the second question is that why they are used. So, and how they are used. They are used in color codes, IP addresses, and MAC addresses. So the example can be like A641, A102, A410, and 2BEF, like this. So this is an example of a basically the type of IP address, or a MAC address can be like DBCD6C4A5B, like this, as it is easier to debug and takes less space. If I ask you to convert this number into binary, so it will take a lot of space. So now after that we have a topic regarding binary addition. So what is binary addition? In this we will use the technique of the addition we have just learned in our basically in our childhood. The technique is same. The only thing is that
when you just add 0 0, it is 0 0 1 1 1 0 1, but when they are 2 1, it is not equal to 2. This is wrong. So how you represent 2 in binary? It is 1 and 0. How? 1 2. 1 means off, 2 means on. And when there are 3 1, it is not equal to 3, it is equal to double 1. How? If I just convert this 3 into binary, it will be like this. You can see the example here. Okay, so this is the whole, basically the base of binary addition. The base of binary addition. So just giving you an example how you will add the two numbers. So these are two numbers, basically each of 8 bits. So you will just write the number 0 0 0 0 1 1 1 0 like this, and then 1 0 1 1 0 1 1 0. You have to add them. So 0 and 0 is 0 when there are 2 2 1 when there are 2 1. So what is the concept? When there are 2 1, the answer will be 1 and 0. So that 1 will be carry and that 0 will just be sum. 1 carry, 0 is sum. So it will be like 1 here and 0 there. Then when there are 3 ones, we have answer 1 and 1. So 1 carry and this one will be sum. So 1 carry and 1 is sum. When there are 2 1, 1 carry, 1 carry, 0 is sum. 2 1, 1 carry, 0 is sum. 2 1, 1 carry, 0 is sum. 1 0 plus 1 1. So this is how we convert the number into, basically not convert, we just add two binary number. Another example is here. I am solving this one. So 1 0 1 0 1 0 1 0. Then I will write 0 1 0 1 0 1 0 1. I have to add them. Simple. 0 and 1 1 1 1 1 1 1 1 and 1. So this will be my answer. Now we have basically the maximum number in this question. Basically in binary number format we can represent 255 and the minimum is 0. Though 2 power 8 is 256, but the maximum number we can represent is 255. But when the sum of two integers exceeds the maximum value will be given, basically will be just say as an overflow. When we have just exceeds our limit greater than 255, so it will become an overflow error. Example can be like this. Just wait a minute. If I want to add 1 1 1 1 1 1 and 1, I have to add like this. Okay, I have to add these two numbers. So 1 and 1 1 0, 1 and 1 1 0, 3 1 1 and 1 1 and 1 1 0, 1 and 1 1 0, 3 1 1 here, 1 here, 3 1 1 here, 1 here, 3 1 1 here, 1 here. If I just write down 1 here, so till here these are 8 bits. This is overflow. Why? Because it cannot store in an 8-bit register. If I talk about, like, if you have a memory unit like this and it has 8 blocks, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, you will store the number 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0, then 1 1 1 1 1 1. So that one is discarded and basically is represented as an overflow error. I hope this is clear. So now the topic is about 2's complement. What is 2's complement? 2's complement is a way to represent a binary number in negative. Basically, for example,
if there is a number 16. So how can I represent negative 16 in binary? So there are some rules we have to follow in order to represent them. So first of all, in 2's complement, the most significant bit is always negative. What does this mean? Means that the leftmost bit, it will tell that the number is basically the negative or not, and it will also tell that basically that number belongs to 2's complement or not. In 2's complement, that number, the leftmost number, means if I talk about the 4-bit number 1248, that the leftmost number will be negative, and if I talk about for 8-bit, the leftmost number, which is 128, will be negative. And if I talk about the zeros and one, if there is one under these numbers, it means that that is a negative number in 2's complement. And if it is 0, it is a positive number, means an unsigned number. So examiner will tell you when it will ask the question regarding the 2's complement, examiner will tell you solve this question using 2's complement. So in 2's complement, in signed integer, using 8 bits, we can maximum represent 127 positive and minimum 128 negative 128. Means in 8-bit register, using 2's complement, we can represent 127, we cannot represent 255. Okay, we cannot represent this. We can represent till negative 128, we can not represent negative 130 in 8-bit register. We are talking about 8-bit register, which is in our syllabus. So the first question is negative 58. So how to solve this? First of all, what you will do, you will just find the positive, ignore the negative sign. What? Find positive, ignore negative sign. Ignore. How you will find positive? You will follow the same rule, converting binary to binary. Okay, you will just write down here, but you will use the format of 2's complement. That leftmost bit will be negative. Why? In order to show the examiner that you know the concept of 2's complement. Okay, you will write the number right like this, ignore the negative sign, you will just convert this. After that, in a second step, what you will do, find the ones complement. This is the most important step because it has 1 marks in the question, basically for the answer. The MS required that one's complement is necessary. So the one's complement is that what you will do, you will toggle all the bits. How? If there is 0, you will just write 1 1 0 0 1 and so on. In the third step, what you will do, this is our 2's complement. What? I am adding my 1 in that toggle, the in that toggled bits, I just add the 1 and I will just finally get my answer in negative. If you want to confirm that, what you will do, you will just write down the on bits, but you have to remember that the most significant bit will be negative. So negative 128 plus 64 plus 4 plus 2. So after just solving them, what answer you will get? You negative 128 plus 64 is equal to 64. If I add 4 is equal to 60. If I add 2 is equal to negative 58. So you can see here I just get my required answer, which was negative 58. I just convert that number into binary number using 2's complement. So the 2's complement, basically this number is the 2's complement representation of negative 58. There is another shortcut method for 1 marks. For 1 marks. What is that? You will just find the negative, and the step 2 is that find first one from right hand side and toggle all on its left. Like I want to find the 1, 0, I just find the 1 here, and after that I will toggle all the bits 1 1 0 0 0 1 1. You can check this one and this one is the same. But if there is a question like negative 114, negative 114, I will
solve this using both the shortcut and the long cut method. For the long cut method, I will just first step is that ignore negative, convert into positive using simple conversion. So I will write here 1 2 4 8 16 32 64 and 128 like this. Then I have to make 114, so 64 and 32 is equal to 96. Then I have to add 16. Okay, it is 112, then 13 and 14. So I just convert them, and my second step is that this was my first step. This is my second step. Second step is that I will toggle all my bits. So for toggling all the bits, what I will do, 0 1 0 1 1 0 0 0 1. And third step is that I will add the 1. So for after adding the 1, simple using the binary addition concept. If there are two 1 is carry, 0 is sum, 1 1 1 1 1 1 1. If you want to cross check your answer, just quickly convert that into uh, just a binary form, like uh, this is the negative 128 plus 8 plus 4 plus 1, so negative 128 plus 8 plus 4 plus 1, sorry, not 1, it is 2, it is equal to negative 114. So my answer matches and I get my required answer. And for the shortcut method, what I will do, I will, for 1 marks, it is important. If you just solve the shortcut method for 3 marks, you will not get the full marks. You will just get the marks for your answer only one. So for shortcut method, when you have to save your time for 1 mark, what you will do, you will simply just convert that number like this, 110, and what you will do, you will just find first one from the right hand side. 0, I just find one, first one, I will write that, and after that I will convert all my values. So you can check this one and this one are same, this for 1 marks and this for 3 marks or 2 marks or 2 marks. Okay. अच्छा, तो आफ्टर टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉजिकल शिफ्ट्स का। बेसिकली ये एक सिंपल टॉपिक है। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट, द राइट एंड द लेफ्ट शिफ्ट। राइट में हम क्या करते हैं, हम अपने जो डायनरी वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं जो अफेक्ट होता है, और लेफ्ट में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये अफेक्ट कैसे कंसीडर होता है, उसके लिए एक फार्मूला है 2 पावर n, वेयर n आर द नंबर ऑफ बिट्स जो कि शिफ्टेड, जो हम शिफ्ट करते हैं या क्वेश्चन में हमें वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 0। सिंपल, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट, और कितनी बिट्स, 2 बिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम किस तरीके से इसको शिफ्ट करेंगे। प्रोसेस 1 में आप क्या करेंगे, आप अपना जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से आप लिखेंगे, और यू हैव टू नो दैट आपको कौन सी बिट्स आपको डिस्कार्ड करनी है। आप राइट साइड पर मूव कर रहे हो तो ये जो राइट जो 2 बिट्स होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। अच्छा, बाकी जो आपका आंसर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, लाइक इफ़ आई जस्ट मेक द बॉक्स इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये सब टूवर्ड्स राइट साइड ये मूव कर जाएंगे, राइट लाइक दिस, और जो आपका आंसर होगा वो एट द एंड आप 2 ज़ीरो को ऐड करोगे। ठीक है, जो आपका आंसर होगा उस पर अफेक्ट क्या आएगा। सो कितनी शिफ्ट थी, 2 बिट्स की, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो आपका जो आंसर होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। द अफेक्ट, योर अफेक्ट विल बी दैट योर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। सेकेंड क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 0 0 0 1 1 0 0, राइट लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है,
अच्छा, अब हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट हमें परफॉर्म करना है, लेकिन लेफ़्ट पे, और कितनी, 3 बिट्स। तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी जो लेफ़्ट पे परफॉर्म करनी है, तो आप ये 3 वैल्यूज़ आपकी डिस्कार्ड होंगी, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1 1 1 0 0, और एंड में आपके क्या हो जाएंगे, 0 ऐड हो जाएंगे, राइट लाइक दिस। ओके, सो जो भी आपका इफेक्ट क्या बनेगा इस आंसर पे, 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, मीन्स आपका जो भी ओरिजिनल नंबर होगा वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, व्हेन यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, मतलब जितनी आपकी शिफ्ट्स हैं उतने आप ज़ीरो लेफ़्ट पे ऐड कर दो, और लेफ़्ट शिफ्ट की बात हो तो आप उतने ज़ीरो राइट पे ऐड कर दो। ओके, नाउ एक और तरीके से सवाल पूछा जाता है कि हाउ मैनी बिट्स डू आई नीड टू शिफ्ट, अगर मैं डिवाइड करूं अपने नंबर को 16 से, सो मुझे कितनी बिट्स, 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, मीन्स मुझे 4 बिट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट पे इन ऑर्डर टू गेट माई आंसर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 2 पावर 3, मीन्स 3 बिट्स को आप कहाँ शिफ्ट करोगे, लेफ़्ट पे। डिवाइड बाय 4 मीन्स अगेन 2 पावर 2, मीन्स 2 बिट्स को आप क्या कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट पे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, नाउ सॉल्विंग द पास पेपर। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या है, द बाइनरी नंबर दिस इज स्टोर्ड इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, वी हैव टू परफॉर्म लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 3 प्लेसेस, बेसिकली लेफ़्ट लॉजिकल शिफ्ट हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो आपका हमारा आंसर क्या होगा, हमारे पास ये जो 3 बिट्स होंगी ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, सो 0 0 0 1 1, और जितनी बिट्स हम डिस्कार्ड करते हैं उतने ज़ीरो हम राइट पे लगाते हैं, तो दिस विल बी आर आंसर। सेकंड बी पार्ट जो है वो हमारा वो ये है कि टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट लॉजिकल शिफ्ट टू ऑफ 2 प्लेसेस इज करेक्ट, मीन्स लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट पे हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, द डिवाइड की नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई की चांस, डिवाइड की तो नहीं हो सकती। अब मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, सो दिस विल बी माई आंसर, वाई, बिकॉज 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। नाउ द सी पार्ट, हमारे पास एक नंबर है जो कि स्टोर्ड है एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, हमें इसको कन्वर्ट करना है डायनरी में। सो हमें एक बात का ख्याल रखना है, जो हमारे पास जो शॉर्टकट लिस्ट है व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी टू डायनरी, तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 और -128 यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने जो नंबर होगा वो एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, 1 1 0 0 0 1 0 1, और जो भी वैल्यूज़ हैं हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे, राइट लाइक दिस, +1, ये तो होगा 35, यस 35, सो -128 + 35, हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो 3 and 9, सो हमारा जो आंसर होगा वो -93 के बराबर होगा। वाई, बिकॉज जो हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव की है, और वो बेसिकली हमारे पास -128 के साथ है, जो हमारा एक बड़ा नंबर है। देन जो डी पार्ट है वो हमारे अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, binary is a base 2 number system. Give the name of the number system that is base 16. So hexadecimal, hexadecimal. Then 3 number are entered in a computer. The computer converts the number, stores them as binary. Give the number that would store for each binary numbers. Okay, binary हमें इसकी बतानी है, तो सिंपल 10 की क्या होगी, 1 2 4 8 16 32, सो हमें 10 बनाने के लिए ये चीज़ ऑन करनी है, सिंपल, राइट लाइक दिस। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 0 1 0। फॉर 50 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 एंड लाइक 16 इज इक्वल टू 48 एंड देन 49 50, सो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा, सिंपल। देन फॉर 201 के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128,
So 128 and 64 is equal to 190, 192, and then 192 plus 16 is equal to 8, and 9, 10. It will be greater, so I will just remain 200 and 201. सो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 11001001. Explain why the data is converted in binary by computer. Why? Because computer only understand machine code which is in zeros and ones. The binary data is also used in also used to store data inside memory. टू बाइनरी इंटीजर्स हैं, हमें इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है 3 मार्क्स के लिए, तो प्रॉपर वर्किंग शो करनी है. सो हमारे पास जो नंबर है वो ये है 1000 राइट लाइक दिस, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 011 देन 00110. तो हमें इसकी एडिशन परफॉर्म करनी है. तो हमारे पास 0001101 when there are 2 1 carries 1, sum is 0 when there are 2 1 carries 1, sum is 0 and 1. सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ गया. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है -32 का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करना है बेसिकली बाइनरी नंबर के अंदर. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव साइन को और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे. सो सिंपली 1 2 4 8 16 32 64 एंड देन 128. सो 32 बनाने के लिए मैं ये ऑन करूँगा, बाकी सारी ऑफ कर दूँगा. पहला स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम बिट्स को टगल कर देते हैं. जो 1 है उन्हें 0 और जो 0 हैं उन्हें 1. सिंपल. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम 1 को ऐड करते हैं. सिंपली हम यहाँ 1 को ऐड करेंगे. सो 1 and 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 देन 1 1. ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया. आई होप इट इज़ क्लियर. यस, ये हमारे पास आंसर है.